नमस्कार मु डॉक्टर मानभंजन जेना एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी IMS सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आसंतु आमे हार्ट फेलियर विषय किसी जानिबा। प्रति वर्ष मे 1 रु 7 पर्यंत हार्ट फेलियर अवेयरनेस वीक पालन करा जाए। एई वर्ष हार्ट फेलियर अवेयरनेस वीक रो थीम होची डिटेक्ट द अनडिटेक्टेड। दैट मीन्स जो मानक आम डिटेक्ट करि पारि नाहु, जो मानक हार्ट फेलियर अच्छे आम एपर्यंत जानी नाहु, आसंतु आम तांको डिटेक्ट करवा और तांको अर्ली डायग्नोसिस करवा, ट्रीटमेंट दबा सो दैट दे कैन लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। आउ ए वर्षर थीम होची 25 in 25। दैट मीन्स आमे जदि प्रति सबु हार्ट फेलियर पेशेंट को अर्ली डिटेक्ट करवा कि गोटे वर्ष मध्य आम डिटेक्ट करि पारिबा, तेबे आमे 25% लोकन को 25 इयर्स मध्य मृत्युमुखर सेव करि पारिबा, तो बंचाई पारिबा। तेबे ये हार्ट फेलियर लक्षण कौन केमिति जानिबा गोटे पेशेंटर हार्ट फेलियर रोग होइछि कि नहीं। तेबे हार्ट फेलियर प्रथम लक्षण है डिस्निया माने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, धई सई हवा, लोअर लिम्स फुलिबा, गोड़ फुलिबा, पेट फुलिबा, अंडकोश फुलिबा, अल्प काम धई सई हो जावा, बसी रहिले भी धई सई लागिबा, ओजन बढ़ी जावा, कमी जावा, निद न हवा, चिड़चिड़ापन हवा, ये सब लक्षण हेले आम कहवा जे पेशेंट हार्ट फेलियर सफर होती। तेज हार्ट फेलियर मुख्य रिस्क फैक्टर बा कारण गुड़िक हूँ डायबिटीज, उच्च रक्तचाप जो हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडेमिया, ओबेसिटी और स्ट्रेस। आज समाज रे स्ट्रेस होची गोटे मुख्य हार्ट फेलियर कारण तेणु जदि आम यही सब रिस्क फैक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पारिबा, तेबे निश्चय आम गोटे हार्ट फेलियर रोगी को एटलिस्ट साइंस एंड सिम्पटम रक्षा करी ताको गोटे लंगजिविटी, गोटे लंग ड्यूरेशन लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ दे पारिबा। तेबे ए हार्ट फेलियर पई कौन कौन प्रिकॉशन नवा दरकार। ए हार्ट फेलियर पई जने रोगी डॉक्टर बा कार्डियोलॉजिस्ट प्रकोष्ठ समय परामर्श नवा दरकार। जहाँ जहाँ मेडिसिन से प्रेस्क्राइब करेंगे से मेडिसिन गुड़िक उचित समय खाइबा दरकार और ठीक इंटरवल रे डॉक्टरों को पाखरे फॉलोअप करवा दरकार। और जो परिमाण पानी इंपोर्टेंट जिनस हूँ वाटर इनटेक, टोटाल फ्लूइड इनटेक, केते परिमाण पानी पीवा कथा से भल भाव में ध्यान देवा दरकार। आ कौ खाद्य खाइले हार्ट फेलियर प्रिवेंशन हो पार से जानवा दरकार। बहुत प्रकार खाद्यर प्रकार भेद अच्छी। गोटे प्रकार भेद हो डस्ट डाएट। जदि डस्ट डाएट मीन्स जो खाद्य आमर प्रचुर परिमाण पनीपरिया फलमूल थी, लीन फैट, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स, नट्स और लो अमाउंट बा बहुत कम परिमाण फैट बा ऑयल बा कार्बोहाइड्रेट थी, से परिमाण खाद्य खाइबा। आउ हार्ट फेलियर रोगी को सदाबले कहबी से माने कम मात्रा लुण खाइबे। तरकारी बा सब्जी जितकी लुण पड़िया दरकार से लुण खाइबे, आउ अधिक लुण खाइबे नहीं। आउ से आमे माने जो मानकर हार्ट फेलियर होता है ताको आमे कहिताउ प्रतिदिन से 2 to 3 ग्राम रु अधिक लुण सेवन करेंगे नहीं। अर्थात जो मानकर गोड़ फली मुँह फली पेट फली ताकू मध्य आमे बारण करता से लेस देन 2 ग्राम रु कम लुण खाइबे। आ सहित स्ट्रेस रो शिकार होते तेबे तांकर उपयुक्त मते उपचार हवा दरकार। जो साइकियाट्रिस्ट को देखई तांकर प्रॉपर उपचार करवा दरकार। आ यही हार्ट फेलियर माध्यम मु कहबी हार्ट फेलियर फैमिली मेंबर्स को बहुत गुड़िए सहयोग करवा दरकार। कहीं हार्ट फेलियर रोगी माने निज विषय भल भाव जानी पारती नहीं, तो तांकर पुओ हो, झील हो, भाई भौणी जो मैंने अच्छा से हार्ट फेलियर साइंस एंड सिम्पटम जानवा दरकार। रोगी कौ प्रकार खाद्य खाऊँ कौ प्रकार मेडिसिन सेवन कर मेडिसिन डोज कौन केते इंटरवल रे नेबा अछि जानवा दरकार, केते परिमाण रे पानी पीवा दरकार से जानवा दरकार। आउ तांको बारंबार कहीं आम बहुत समय आम वाटर पिल्स जो गुड़ा को खाइले अत्यधिक मात्रा परिस्रा हुए से सब मेडिसिन गुड़ा से प्रचुर परिमाण जानवा दरकार। आउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है यदि हार्ट फेलियर इमिडिएट साइंस एंड सिम्पटम्स आसूची कि गोटे लक्षण आसूची ताको इमिडिएटली जानी कार्डियोलॉजिस्ट को परामर्श नहीं तांकर उचित परिमाण रे ट्रीटमेंट करवा दरकार। जदि आम यही सब खाद्य औषधर किंबा अन्य प्रकार जो सब एक्सरसाइज मु कहली सबुर जदि आम प्रकृत भाव में आम तांकर निराकरण करिपरिबा, तेबे निश्चय आम हार्ट फेलियर पेशेंट रो साइंस एंड सिम्पटम्स फ्री गोटे लाइफ दे पारिबा और तार लंगजिविटी को इम्प्रूव करिपरिबा सो दैट ही कैन लीड ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंपोर्टेंट जिनस हूँ आम जिते दूर संभव पारिबा तार सिम्पटम साइंस दूर करी पेशेंट को गोटे लंग ड्यूरेशन लाइफ दबा। थैंक यू। हार्ट फेलियर रोगी को डे टू डे लाइफ रे कौन कौन क्लिनिकल टिप्स दरकार सो दैट जो द्वारा से गोटे डिजीज फ्री लाइफ मेंटेन करें। प्रथमत मु कहबी से निजर औषध गुड़ को ठीक समय सेवन करवा दरकार। कौ अमाउंट रो डोज नौचंती से डोजटा जानवा दरकार।
आ प्रॉपर फॉलोअप रेगुलर इंटरवल रे कार्डियोलॉजिस्ट को फॉलोअप करबा दरकार आ सेमानकर खाद्य पेय आउ जोटा कि केते परिमाण लुण सेवन करबा दरकार केते परिमाण रे पानी पीबा दरकार से जानिबा दरकार जदि तांकर किछि गोटे इमीडिएटली साइंस एंड सिम्पटम्स नुआ सिम्पटम्स बाहरुची किंबा गोटे इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग सिम्पटम्स बाहरुची तेबे इमीडिएटली तांको हॉस्पिटल नेबार व्यवस्था करबा दरकार आ सेही साइंस एंड सिम्पटम्स विषय फैमिली मेंबर्स भी जानिबा दरकार कौन कौन खाद्य खाइबे ता निहाती इंपोर्टेंट जिनस ता सहित मु कहबी कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग जो माने स्मोकिंग करथिबे स्मोकिंग रु पूरा निवृत्त हवा दरकार आ जो माने अल्कोहल इंटेक करथिबे से माने मध्य इंडिया भलिया ट्रॉपिकल कंट्री रे तांकर मध्य अल्कोहल को परिमाण को प्रबल मात्रा रे प्रचुर परिमाण रे कमेबा दरकार किंबा मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ रेड वाइन मु कहबी करबा दरकार ता सहित रेगुलर एक्सरसाइज करबा दरकार आउ प्रॉपर परिमाण रे रेस्ट एडिक्वेट रेस्ट आ जदि स्ट्रेस किंबा डिप्रेशन एंजाइटी थिबो तेबे तेबे साइकियाट्रिस्ट परामर्श नहीं तार ट्रीटमेंट हवा दरकार यदि एई सब पॉइंट्स जदि ध्यान देबे तेबे निश्चय मु कहबी ए हार्ट फेलियर पेशेंट कैन लीड ए साइंस एंड सिम्पटम्स फ्री लाइफ। थैंक यू। नमस्कार, a heartfelt welcome to all my audience. Heart failure is a disease complex which is because of the structural and functional abnormality of the heart, that because of the filling defect as well as the structural defect. Every year heart failure awareness is celebrated in a particular week. This year we are going to celebrate it from 1st to 7th May. This year the heart failure awareness theme is detect the undetected. That means if we detect those undetected heart failure patients early, that means by doing a early diagnosis, early intervention, then we may give them a symptoms and disease free life. And this year there is an initiative that means 25 in 25. That means if we detect those heart failure patients early and we can take care of them properly within first year of their detections, then we may reduce the heart failure mortality by 25% in the next 25 years. Let's come, what are the signs and symptoms of heart failure? The most important signs and symptoms, the symptoms are the fatigue, easy fatigability, dyspnea, tachycardia, tachypnea, weight loss or weight gain, there is the somnolence or the deprived of sleep, mental obtundation, there is increase of abdominal girth or bloating sensation, feeling of uneasiness or dizziness. These are the signs and symptoms of heart failure. If a person is having such type of symptoms, that means he may be suffering from heart failure. Let's discuss what are the risk of heart failure. The primary important risk factors for heart failure are in India is the diabetes, because India is the #1 diabetic capital in the world or universe. So diabetes, hypertension, dyslipidemia, obesity, and the stress or depression or anxiety. These are the primary risk factors for heart failure patients. So how to prevent those heart failure signs and symptoms? For that we have to do certain investigations. We have to consult a cardiologist or a physician as early as possible. And for heart failure detection, as a cardiologist I can say that we are doing ECG, echocardiography, and certain biochemical parameters like NT-proBNP, CBC, sodium potassium, urea creatinine, etc. and etc. And we are giving medications to decrease the signs and symptoms of heart failure. So from the patient's educational point of view, I can say that what are the points they should remember. Patients should take the medications regularly at regular interval, and patients should have a regular follow-up. Patients should maintain a proper diet. That means the diet should contain the maximum number of fresh leafy vegetables, fruits, less number of the Patients should follow a particular diet which should contain maximum number of the leafy vegetables, fresh fruits, lean meat or poultry or fish, eggs, legumes and nuts, and less amount of fats, carbohydrates and oils. And patients should take regular exercise and adequate rest. If patient is suffering from any anxiety, stress or any psychiatric illness, then he should consult a psychiatrist for his ailments. And for heart failure patient, I should say that there is
must a restriction of salt and sugar. If patient is taking any added sugar in the day-to-day life, then he has to cut off his extra salt. Preferably, a heart failure patient should take 2 to 3 grams of salt. If the patient is having congestive heart failure symptom, then we should restrict the salt intake to less than 2 grams. So patients should avoid the preserved food, those which have high sodium content. And patients should follow certain clinical tips to maintain a good, healthy, heart-healthy lifestyles. Patients should take medications regularly. He should consult the physicians or cardiologists regularly. He should have a regular follow-up. He should take a diet which is prescribed by his physician or dietitians. He should have adequate rest. He should take adequate medications for his stress or anxiety, and patient should lead a physical activity advised by his doctors. Then a heart failure patient can lead a symptoms-free life in future. Thank you.